Hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist and that playlist is for Superposition of Waves. Here, okay, our last video is for last video हमारा overall harmonics overall और octave के Now we are taking and equations for vibration of string. Clear? So expression for vibration of string. Okay, so making our next term expression for vibration of string. So expression for vibration of stretched string. Yeah. तो expression देखते हम लोग यहाँ से. So expression for vibration of stretched string क्या होगा? Expression for vibration of stretched string के लिए so हम लोग क्या करेंगे? एक string कंसीडर करेंगे. So here is the string. और ये string ये rigid support वाला है. Yeah. So these are two rigid supports. ये आपके rigid supports हैं. ये rigid support के बीच में हम लोग रस्सी बांधे हैं. Clear? और रस्सी बांधने के बाद में हम लोग इसको plug करेंगे at a different point. And when we are plugging that string at the different points, it produces waves. Clear? और वो जो waves produce होगी, so it is because this is a rigid body, this is rigid body, and this is tied between this rigid body. So this produces a stationary waves. Clear? तो यहाँ से एक stationary waves बनते हुए जाएगी. चलिए तो अब समझते हैं हम सबसे पहले हमारे लिए कुछ फॉर्मूलेस होंगे तो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे b is equal to n into lambda होता है हमारा पहला फॉर्मूला. So that means the speed of wave is equal to n into lambda where n is fundamental frequency. Lambda is your wavelength, lambda आपकी wavelength हो जाती है. Here और एक फॉर्मूला होता है हमारा b is equal to under of this is p upon and this is m. So where t is tension generated in the string क्योंकि हम लोग यहाँ string की बात कर रहे हैं और m आपका linear density होता है. Clear? So यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. लैम्डा इज योर wavelength of the string. T tension generated in the string. And m is linear density. इसको मास पर यूनिट में लाइन भी कहते हैं. मास per unit length. So this is your mass per unit length. Clear? So this is n is your fundamental frequency and our fundamental frequency lambda is your wavelength. T tension generated in the string, m is linear density, and this is also called as mass per unit length. And v is the speed of wave. So the n is the speed of wave. Clear? चलिए तो ये बेसिक टर्म्स हो गई हमारी. अब बेसिक टर्म्स होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि भैया हम लोग ने एक स्ट्रिंग कंसीडर की है. स्ट्रिंग इज टाइड बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स. ठीक है. अब ये दोनों स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग जो है दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में हम लोग ने डायरेक्ट इसको टाइप कर दिया. ठीक है. चलिए तो हम लोग एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच लेंगे. सो वी आर टेकिंग फॉर द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. Clear? ऐसे चलते हैं हम लोग. सो फर्स्ट सेकंड एंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. Clear? चलिए अब समझ लेते हैं. चलिए अगेन कंसीडरिंग टू रिजिड सपोर्ट्स. टू रिजिड सपोर्ट हम लोग ले लिए कुछ डिस्टेंस. ठीक है. और these are these two rigid supports. इनके बीच में हम लोग ने रस्सी बांध दिया. Clear? So this is tied a string between this two rigid support. अब क्या करता हूँ मैं? अब एक सेंटर है इसके सेंटर पर मैं प्लग करता हूँ. तो प्लग करने के बाद में कुछ ये रस्सी ऐसे होगा. सो एक परफॉर्म वाला सिग्नल हो गया. एक लोग परफॉर्म करके आएगा. ठीक है. अब लोग परफॉर्म कर दिया तो ये बन गया आपका नोड. दिस इज आल्सो नोड. ठीक है. और ये बन गया आपका एंटी नोड. सो दिस इज योर एंटी नोड. क्लियर? और अगर हम लोग देखेंगे तो यही आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी बन गई. Because this is node and this is node, one layer node, so this is lambda by 2. Clear? Because the distance between two successive nodes is lambda by 2. Distance between two successive antinodes is always lambda by 2, and the distance between node and adjacent antinode is lambda by 4. ठीक है. तो ये नोड है इनके बीच में डिस्टेंस कितना lambda by 2. So it means that your value of L is equal to lambda
lambda by 2. So now we are solving for the first mode of vibration. ये आपका first mode of vibration के लिए है. So this is for first mode of vibration. So for the first mode of vibration, यहाँ पे first mode of vibration के लिए. So lambda is L is equal to lambda by 2. तो मैं यहाँ से ले लूँ. तो so this is lambda is equal to this is twice of it. Clear? So यहाँ से lambda मेरा कितना हो गया? Twice of it. It means that the wavelength which is produced in the string, so it is twice of L. Clear? चलिए. अभी और सामने चलते हैं हम लोग lambda is equal to twice of L. ठीक है? अब यहाँ से we know that I will give out to formula B is equal to N into lambda. ठीक है? And V is equal to under root of P upon L. These are this formula. Where V is velocity, V is speed of wave, and lambda. Sorry, N into lambda, and then is fundamental frequency. Lambda is wavelength, again V is speed, again this T is tension generated in the string, and this L is linear density. ठीक है? चलिए तो यहाँ से मैं फॉर्मूला मारता हूँ, N is equal to क्या हो जाएगा? V upon. तो V का वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ, लैम्डा ये पुट कर दिया, तो इक्वेशंस को पुट किया जाएगा. So this is equal to, so this is under root of T upon L divided by twice. ठीक है? So ये कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, so 1 upon twice L, ठीक है, under root of this is T upon L. Clear? So this is the first fundamental frequency. For the first mode of vibration, so this is called as first fundamental frequency. इसको हम लोग कहेंगे for, this is the first fundamental frequency. So this is the first fundamental frequency. Or it is called as first harmonic. First. ये पहली fundamental frequency है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे for first harmonic. So this is first harmonic. ठीक है? चलिए देखते हैं सामने हम लोग इसको लेंगे. ये हो गया आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए. ठीक है? अभी हम लोग बात करते हैं फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. दिस इज फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. So for second mode of vibration, so what is the second mode of vibration again? फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन में हम लोग ने स्ट्रिंग को एक जगह पे प्लग किया था, एक पॉइंट पे हम लोग ने प्लग किया था. हम दो पॉइंट पे ऊपर प्लग करेंगे. सो अगेन कंसीडर दिस इज रिजिड सपोर्ट और ये आपका सेकंड रिजिड सपोर्ट. इनके बीच में ये रस्सी. ठीक है? अब हम लोग टू डिफरेंट पॉइंट पे प्लग करेंगे. सो वी गेट दिस टू वेव्स, टू लूप्स. कुछ टू लूप्स बन जाएगा. ठीक है? यहाँ से हम लोग कुछ दो लूप्स मिलेंगे. ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं हम लोग नोड और एंटी नोड. सो दिस इज योर नोड, दिस इज आल्सो नोड, दिस इज आल्सो नोड. ठीक है? ये आपका फिर एंटी नोड, जो कि आपका एंटी नोड. एंड दिस इज लेंथ, ये आपकी लेंथ हो जाएगी. और वही लेंथ हम लोग देखेंगे. सो L इज इक्वल टू वही लेंथ हम लोग लेंगे. तो यहाँ से देखिए दिस इज नोट the distance between two successive nodes is lambda by 2. Again lambda by 2. So this lambda by 2 plus lambda by 2 so we get lambda. ठीक है? It means that your length should be equal to your lambda. L कितना मिल गया आपको? lambda. ठीक है? Again यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे. जैसे प्रीवियस को बनाते थे. So V is equal to यहाँ से पहले तो ले ले V L is equal to lambda. ठीक? And V is equal to N lambda. N is equal to V upon lambda. फिर V is equal to under root of P upon L. ठीक है? चलिए तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर करते हैं. So we get so N is equal to under root of P upon L and this is. ठीक है? चलिए फिर से इक्वेशन बना लो. So N is equal to how much? So 1 upon L कर दो. लैम्डा ही करा है. So 1 upon L under root of P upon. ठीक है? तो अगर यहाँ से वो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो उसकी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. सो n इज इक्वल टू दिस इज 2 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ p अपॉन l. ठीक है? तो ये आप देखेंगे इतना हिस्सा आपका फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया, फर्स्ट हार्मोनिक बन गया. तो इसको मैं अगर यहाँ से ले लूं सो इट इज दैट सो इट इज बाय 1/2. ठीक है? और द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं तो मैं इसको इनटू से रिप्रेजेंट कर देता हूं. सो इट मींस दैट n2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ. ठीक? समझा? क्लियर? ये जैसे कि जैसे यहाँ आ गया और
ये पूरा आपका बन गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक, ये आपका सेकंड हार्मोनिक हो गया, क्लियर। एंड दिस सेकंड हार्मोनिक इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, ये आपका हायर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, clear. So this is called a second harmonic, first overtone, clear. And this is for second mode of vibration. Similarly चलते हैं हम third mode of vibration की तरफ, और third mode of vibration, clear. Third, for third mode of vibration, third mode of ठीक है। चलिए फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए सॉल्व करेंगे फिर से, अगेन कंसीडरिंग टू रिजिड सपोर्ट्स। मोड ऑफ वाइब्रेशन आप तीन डिफरेंट पॉइंट पे प्लग करेंगे स्ट्रिंग को। पहले सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे दो डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग ने प्लग किया हुआ था, ठीक है। इट मींस एट टू डिफरेंट पॉइंट पे, और जहां हम लोग प्लग करते हैं हमेशा डिफरेंट होता है। सो दिस इज एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग। अभी हम लोग यहां तीन डिफरेंट पॉइंट पे प्लग करेंगे। सो दिस इज स्ट्रिंग, अब मैं तीन इक्वल डिस्टेंस के ऊपर तीन पॉइंट के ऊपर प्लग कर रहा हूं। सो वी गेट दिस थ्री लूप्स, देखो कुछ तीन लूप्स मिल गया है, ठीक, कुछ इस तरह से। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। चलिए देखिए यहां से फिर से अगेन। सो दिस इज योर नोड, ये आपका बन गया नोड, ये भी आपका नोड, दिस इज नोड। For third mode of vibration we get to 4 node and 3 antinodes. ये एक एंटीनोड हो गया, ये एक एंटीनोड हो गया, ये एक एंटीनोड हो गया। So for third mode of vibration we have 3 antinodes and 4 nodes. For second mode of vibration we have 3 nodes and 2 antinodes. For first mode of vibration we have 2 nodes and a single antinode. ठीक, चलिए तो इसमें बीच में लेंथ ले लेते हैं। So this is ये आपकी लेंथ हो जाएगी, और वही लेंथ आपकी कितनी होगी देखते हैं हम लोग। यहां से यहां लैम्बडा और यहां से यहां लैम्बडा बाय 2, तो ये हो गया आपका 3 लैम्बडा, ठीक। आप इसको ऐड कर लेंगे। सो दिस इज लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, तो तीन बार लैम्बडा बाय 2 ऐड हो गया, सो इट्स 3 लैम्बडा बाय 2। तो लेंथ कितनी होगी यहां की, तो यहां से हम लोग लेंथ बना देंगे। सो L इज इक्वल टू दिस इज 3 लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस है, ठीक। तो आपका ये थ्राइस डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अगेन वी नो दैट b इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू e अपॉन लैम्बडा। मैं इसको बाद में n को चेंज कर दूंगा और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो n3 हो जाएगा। और फिर देखते हैं कितना ओवरटोन और कितना हार्मोनिक बनता है। तो अगेन b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन m, e अपॉन m हो जाएगा। चलिए तो हम लोग प्रूव करते हैं इसमें फिर से। सो अगेन n इज इक्वल टू, देखिए यहां से अंडर रूट ऑफ t अपॉन m एंड डिवाइडेड बाय दिस इज लैम्बडा। So n is equals to this is 1 upon, so this is twice l divided by 3 and this is under root of 3, ठीक है। तीन ऊपर n is equals to 3 1 upon twice l under root of t upon m, ठीक है। तो आप देखिए यहां से, so this is 1 upon twice l under root of t upon m, 1 upon twice l under root t upon m, and this is your n। अगर मैं यहां पे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो इसलिए ये मेरा n3 यहां n3, ठीक है। So we have n3 और ये n3, so it means that n3 is equal to thrice of, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, so this is called as third harmonic, क्या आपका हो गया third harmonic and second overtone, ठीक है। आपका ये थर्ड हार्मोनिक हो गया एंड सेकंड ओवरटोन, क्लियर। सो दिस इज फॉर द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी देखिए हम लोग फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन नंबर 4 फॉर फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो फॉर फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन अगेन सी, फिर से वही कहानी करेंगे हम लोग, एक लोग आगे एक्स्ट्रा कर देंगे। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप फोर्थ मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर
अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो ठीक है। तो सेकंड मोड फर्स्ट मोड हो गया, सेकंड मोड हो गया, थर्ड मोड हो गया। फोर्थ मोड में कुछ नहीं करना है, हम इसमें एक और लूप है हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और इसी तरह से ये चलते रहेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ में सॉल्व करेंगे, सब लोग साथ में सॉल्व करिए, ठीक है। सो दिस इज योर रिजिड सपोर्ट, आपका रिजिड सपोर्ट हो गया और इस रिजिड सपोर्ट के बीच में हम लोग रस्सी बांध देंगे, ठीक है, और चार डिफरेंट पॉइंट के ऊपर प्लग करेंगे तो हमारे पास चार लूप्स बन के आनी चाहिए, ठीक है। उसी से बन जाएगी, क्लियर? क्लियर? So it means this is node, this is node, this is node, node, and this is. For four mode of operation, we get the 5 nodes and 4 anti-nodes. So this is A, this is A, this is A. ठीक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये L और ये भी लेंथ आपकी हो जाएगी 1 से, ठीक है। तो अगेन इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और कैसे करने से। सो अगेन B is equal to सॉरी फाइनल लेंथ ले लो, L is equal to twice lambda चाहिए, twice lambda, ठीक है। तो lambda is equal to 1 upon lambda is equal to L upon 2, ठीक। चलिए V is equal to lambda, N is equal to V upon lambda, V is equal to under root of P, ठीक। और यहाँ से under root P upon N हटाते हैं, N is equal to under root of P upon N divided by lambda, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर से अगेन, so N is equal to 1 upon lambda, lambda is L by 2 and this is under root of P upon 2 ऊपर, so N is equal to 2 upon L under root of P upon 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 4 नीचे आ गया twice L under root of P upon L, clear? So it means that N is equal to this is यहाँ फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए ले लो, तो यहाँ मैंने 3 लिया था थर्ड मोड के लिए, तो मैं 2 ले लेता हूँ, 9 4 7 4 and 4 and 4 and 4 and 4 4, ठीक है। So it means that this is what my this is my fourth harmonic, fourth harmonic and third mode. So this is called as fourth harmonic and third mode. Clear? So this is called as expression for vibration of stress string, and this is for the first mode of vibration, for second mode of vibration, for third mode of vibration, for fourth mode of vibration. So this is the expression for vibration of stress. Clear? Okay, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वीडियो इज हमारा नेक्स्ट वीडियो ये बनने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखना हमारा सो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लॉज देखेंगे, जो 3 लॉ हो गए, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लिनियर डेंसिटी, क्लियर? ये इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे, सो इट इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टी और क्लियर। सो कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल, आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीजें इधर से हम लोग आपको सब इस क्लास में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप इसका मजा उठाइए और जीवन को अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच।